Lovely Sunday morning. If I'm not wrong, I think most parts of the country are experiencing rainfalls. And I'm sure the weather is much better. So I hope you're enjoying your Sunday and you're having a great time. And I'm Nidhi, proud mother of a young man, creator of my own life, a lifelong seeker, an omnivert, a textile professional turned corporate facility trainer, an emotional clarity coach, and an author. And I'm here with my weekly live to share something really important with you. So thank you. Thank you so much for joining wherever you are right now. सबसे पहले I would love to know कहाँ से join कर रहे हो आप. So do write down in the chat. Where are you joining from? कहाँ से हैं? And are you joining me on LinkedIn? Are you joining me on YouTube? Because this is a simultaneous live on both the platforms. Side by side चल रहा है. So yeah. And I would also love to know आप क्या करते हो? Are you a trainer, a coach? Are you a training company? Are you a client who hires trainers or training organizations? Are you an L&D professional? आप कौन है? Maybe you are already one of these. Maybe you are thinking to start in this area. You're thinking you're just starting out as a coach or a trainer or any one of these profiles. So please write down. I would love to know आप कहाँ से join कर रहे हो, क्या करते हो, and I'm very sure I'll be able to share something really valuable by the end of today's session. छोटा सा लाइव है बट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज डू नॉट मिस दैट इफ यू आर एनी ऑफ दीज प्रोफेशनल्स इन कोई भी आप कर रहे हैं ये. ओके, सो आई वांट टू शेयर एन एक्सपीरियंस विद यू टुडे. कुछ टाइम पहले I had gone for a training. So I got a training assignment. And so let me tell you, trainers do not always work directly with organizations as trainers and coaches. You also work through training agencies, through training companies, right? So I had got an assignment through a training company, right? So there are many. Let me explain what are training companies. ट्रेनिंग कंपनीज. सो देर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग डायरेक्टली ट्रेनर्स के साथ नहीं बट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, L&D ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील करते हैं. And so the business development happens between the training organizations and the clients, right? So that's how it happens. And जो भी आउटलाइन एक प्रोग्राम की डेवलप होती है वो क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं अपनी आउटलाइन, उनकी नीड क्या है, उनको क्या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दे क्रिएट एन आउटलाइन एंड दे डेवलप एंड बिल्ड बिजनेस, एंड दैट्स हाउ दे क्लोज अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. नाउ व्हेन द प्रोजेक्ट इज बीन क्लोज, देन दे लुक आउट फॉर ट्रेनर्स, and that's how a lot of trainers work. You can't reach out to the client directly many times, so you go through you get work through these agencies. So most of us work through the agencies as well as with direct clients. So part of our business comes directly with clients as well as through the agencies, right? So I had got an assignment, a project through one of the training agencies. And maybe me, I asked a lot of questions and बहुत चीज़ें पूछी मैंने. पूछा उनसे क्या चीज़ है, क्यों है, कितने लोग होंगे, all my basic questions, everything, what I always do. So मुझे जितने भी answers मिले, मतलब I did a lot through my questions. So मैंने बहुत कुछ, जो भी मुझे आंसर्स मिले, जितना भी मुझे बताया गया ट्रेनिंग एजेंसी के थ्रू, मैंने उसके हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर किया, एंड व्हाटएवर आउटलाइन एंड व्हाटएवर माय side of it I wanted to put, and I went for the training. Okay. That's how my day unfolds now. When I go for the training and I realize मैं अकेली हूँ, पहले वहाँ पर कोई है ही नहीं अभी तक. जो मुझे टाइम दिया गया था वो गलत था. राइट. सो फिर ठीक है, क्लाइंट आए, मुझे एक नंबर लास्ट डे शेयर किया गया था, लास्ट मोमेंट शेयर किया गया था, दो आई वाज आस्किंग फॉर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट देन you are not always shared connects with the clients. तो मैं वहाँ पहुँची
and had a brief discussion about what I have in mind and what the client might want, and अगर कुछ last minute उनको है तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा है, मैंने कहा यार आपको आउटलाइन तो बता दिया होगा, ऐसे यस मुझे पता है एंड लेकिन अगर आपका कोई लास्ट मिनट आपको लग रहा है कुछ आप शेयर करना चाहते हो आप बताओ, आई स्टिल हैव टाइम, पॉसिबली आई कैन चेंज इट। एंड दिस said नहीं बिल्कुल सही। So सारा set हो गया, I prepared everything, participants started coming in and before the training started a participant came up to me and asked a couple of questions and उनके जो questions थे ना, I was like ये तो कुछ गड़बड़ है क्योंकि इनके माइंड में तो कुछ और है एंड जो मैं आउटलाइन जो मेरे को मिली है वो आउटलाइन कुछ और है, द डायरेक्शन इज नॉट अलाइनिंग राइट नाउ। I went up to the client again. I said, ऐसा है, question आया है. Are you sure this is what I'm supposed to deliver? And मतलब कुछ अगर changes हैं अभी भी बता दीजिए क्योंकि जो question आया है participant की तरफ से वो बहुत अलग है. I have time. I can still make changes. He said नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है. Everything is okay. And ठीक है, we started the training. And after 1 hour, there was a short break. So I went up to the client again. I said, "Is this what you're looking for?" Right? Right. Okay. And I said, हाँ हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिल्कुल ठीक जा रहा है। ट्रेनिंग एंडेड, बहुत अच्छा गया। फुल एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग, दैट्स हाउ आई डू। एंड आई कम टू नो लेटर द नेक्स्ट डे that the participants had something else in mind. वो वहाँ पर गेम्स खेलने आए थे while the client, the L&D person from the client side had training in mind. And I was there as a trainer while the participants had something else in mind. And they were not interested in any kind of training. वो तो वहाँ से सिर्फ खेल खेलने आए थे। उनको सिर्फ इतना बोला गया था आपको आना है, आपको तो बस गेम्स खेलने हैं और आपको अपना पूरा दिन वहाँ बिताना है एंड चले जाना है। अब दे वर वेरी गुड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बट व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द रिजल्ट फॉर देम? दे वेस्टेड देयर टाइम कमिंग देयर। हम तो गेम खेलने आए थे, यहाँ पे तो कुछ सिखा रहे थे, कुछ ट्रेनिंग भी थी, कुछ लर्निंग वर्निंग करवा रहे थे, हमें तो ये नहीं चाहिए था। एंड क्लाइंट कहता है कि ऐसे तो नहीं होता है, ये क्या कराया है आपने? अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई, ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आया, लेट मी टेल यू व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट टुडे। दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ ट्रेनर्स। ओके, हम लोगों के साथ बहुत होता है जहां पर आप अपना बेस्ट देते हो लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। एंड द रीजन इज बिकॉज वन सिंपल थिंग इज मेनी टाइम्स मिस्ड आउट बाय वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स समवेयर। कुछ तो मिस आउट हो गया है और यहां पे भी वही चीज मिस आउट हुई थी। आउटलाइन अप्रूव करा ली गई, सब कुछ हो गया, आउटकम किसी ने डिस्कस नहीं किया। आउटकम is something that was missed out majorly between the training agency and the client. वो चीज पे ध्यान नहीं दिया एंड यहां पर एक अलग ही चीज हो रही थी। सो द ट्रेनर इज डूइंग समथिंग, द एक्सपेक्टेशन इज समथिंग एल्स। That is the missing link, which each one, either you're a trainer or a coach, या तो आप एक training company है जो outline approve करा रहे हो, you're the middle person who is ensuring, who is the connect between the trainer and the client, or you're the client, you're the company who is hiring trainers to deliver trainings for your company। आप जो भी हैं, जो भी stakeholder हैं, जहां पर भी हैं, you need to focus on this very important aspect long before the training is finalized. It's called the outcomes, the expectations। बहुत जरूरी है वो expectations का जानना, समझना, शेयर करना। राइट? अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। हाय राहुल, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। So this is really important. Now, why is it important? अब आप ये सोचिए, आप कहीं जाते हो, you're attending a program, okay? आपको बोला जाता है कि यहाँ पर आपको एक अलग ही सपना दिखाया जाता है कि आपको यहाँ पर कुछ और मिलेगा। आप वहाँ जाते हो and then you spend your money, your time, everything you're spending there, and then you've gone with a different mindset while you get something else. You're already closed. Your mind is not open.
right? So you really need to understand this aspect of, hey, lovely, thank you so much for joining in. So good to have you here. So outcomes is very important, and this is the first thing that you really need to discuss. ट्रेनिंग तो बिल्ड हो जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग किस पॉइंट पे बिल्ड होनी है, कहाँ पे? मुझे अगर पता ही नहीं है कि मेरा जो क्लाइंट है, मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो किस, उनकी ज़रूरत क्या है, हाउ एम आई गोइंग टू बिल्ड माय ट्रेनिंग, माय होल मॉड्यूल्स फॉर द होल डे? अगर मुझे 8 घंटे की ट्रेनिंग डिलीवर करनी है या 1 घंटे की भी करनी है, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू इन इट? मैं क्या एक्टिविटीज़ डालूँगी? दैट इज़ बेसिस द आउटकम व्हाट माय क्लाइंट वांट्स, and my client needs to understand the participants also first. अगर माई क्लाइंट सेज, निधि तुम्हें कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग करनी है, आई एम सॉरी, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ओके आते हैं बहुत बार, एंड वो कहेंगे निधि कम्युनिकेशन का वर्कशॉप करना है, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग करनी है, ओके वेरी गुड, लेकिन व्हाट हैव यू नोटिस्ड? कम्युनिकेशन क्या, कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ी चीज है, आपको उसमें क्या चाहिए? ओके, आप कर देना, हम 5 टॉपिक्स गिना देंगे, कितने घंटे की है? 2 घंटे की है, 2 घंटे में 5 मैं कैसे करूँगी? आप मुझे ये बताइए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपकी जो टीम है, आपको उसमें क्या दिख रहा है? पेन एरियाज़ क्या हैं? Many times the client also doesn't know पेन एरियाज़ क्या हैं, right? So if you're a client, if you're at the end, at the receiving end of it, please understand, you need to know कि आपकी जो टीम है, उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्यों किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग की नीड शुरू हुई है, क्यों आपको दिख रही है? क्या इट्स ओनली अ टिक मार्क? होता है बहुत बार, आपको टिक करना पड़ता है, हमें इतनी ट्रेनिंग्स करानी है, करा दी, लेकिन आप, ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप हियर एंड जस्ट शेयर वन स्मॉल लिटिल थिंग। मेरे एक मेंटर हैं, उन्होंने एक बहुत सिंपल चीज़ बोली थी, जिनसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है। आप किसी भी इंसान से अगर सबसे इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ कुछ मांग सकते हो ना, वो उनका टाइम है। चाहे वो मेरा टाइम हो एज समबडी हु इज डिलीवरिंग इट, चाहे वो आपके पार्टिसिपेंट्स का टाइम हो जो अपना टाइम छोड़ के, काम छोड़ के वहां पर आए हैं। हमें उस काम की, उसकी वक्त की इज्जत करनी चाहिए, और अगर कोई वहां आ रहा है, सो इट्स माई ड्यूटी टू अंडरस्टैंड कि वो यहाँ क्यों आ रहा है। I need to provide them that value. And to provide them the value, I need to know my outcomes. As a coach, as a trainer, I need to ask questions. हम बहुत ट्रेनर्स को मैंने देखा है जो क्वेश्चन पूछने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, मेरे हाथ से ट्रेनिंग चली जाएगी। अरे अगर आपने अपना डिलीवर ही नहीं किया जो वो चाहते हैं ना, तो आपके हाथ से आगे की सारी ट्रेनिंग्स चली जाएंगी। सो इट्स बेटर टू आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस, आपका क्लाइंट, आपका, आपके पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, उनका, उनके पेन एरियाज क्या हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनको कितना नॉलेज है, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, सब जानना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ में वो, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। And on the other side, if you are a client, you need to know who are those participants। आप 20, 25, 100 जो भी दे रहे हो, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी नीड क्या है, क्या देख रहे हो आप उनकी डे टू डे वर्किंग में, जो आपको लग रहा है कि ये लैकिंग है, इस ट्रेनिंग से वो रिफ्रेश हो जाएगा या उनको एक नया स्किल मिलेगा। You have to identify all of these things at your end as well as the trainers end। दोनों एंड पे जितने भी स्टेक होल्डर्स इस पूरे, इस पूरे सर्कल में, सेमी सर्कल में 180 डिग्रीज में इन्वॉल्व है, उन सबको जानना जरूरी है, right? So for God's sake, this missing link of not understanding your outcomes is a big pain in the training industry right now। ओके, आई शेयर अ पर्सनल एग्जाम्पल, आई एम श्योर आपके भी बहुत एग्जाम्पल्स होंगे जहां पे यू वर नॉट टोल्ड अबाउट द आउटकम। आपको कुछ आउटकम या पॉसिबली आउटलाइन बताई गई, आप वहां पहुंचे, वहां पे कुछ और जरूरत थी। ओके, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद अ बैकअप प्लान। ओके, अगर ये नहीं तो ये सही, कुछ बना लेंगे। ओके, कुछ इमीडिएटली वी कैन वर्क ऑन इट। I'm very sure there are a lot other trainers, very efficient ones, who are always prepared with this backup plan। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं नए जो घबरा जाते हैं इससे। और अगर आपको नहीं घबराना है ना, सो प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चनिंग योर क्लाइंट, चाहे वो ट्रेनिंग एजेंसी है एज अ कोच, अगर आप ट्रेनर उनको अप्रोच कर रहे हो, या डायरेक्ट क्लाइंट है, बात करिए, उनको फोर्स करिए अपनी टीम से समझने के लिए प्रॉब्लम क्या है, नीड किस चीज की है,
बिकॉज आप तभी एक अच्छा वैल्यूएबल प्लान उनके लिए बना पाओगे. Why is an outcome important? It's important because it's an outcome that drives the training forward. It helps you set goals for that training. It helps you measure the progress. मुझे ये कराना था, मैंने ये कराया, राइट? यहाँ मेरी जर्नी कैसी रहेगी उस पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस की. It's very important to know that outcome, right? So, the story that I told you, the experience, I realized by the end of it that they were looking for a simple games coordinator. उनको मिल गया एक पढ़ा लिखा trainer. You know, right? So I was like, अरे बता देते भाई, अब मैं आ ही गई हूँ. I'm not going to walk out, right? But I want you to enjoy. It's your time, it's your experience. मैं कराती games, मैं अपने training games पे पूरा focus डालती, मैं learning पे डालती ही नहीं, right? So believe me, any good trainer is ready to adapt. आप बोल के तो देखो, okay? It's not just about paying money, it's also about adding a lot of value. Okay, so please focus on it because engagement activities क्या रहेंगी, ये सब possible है decide करना only once you know the expectations and the outcomes of the participants. बहुत मेरी जब डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात होती है, जब व्हेनेवर आई डू माय डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स, सो सम ऑफ देम कम बैक कि नहीं नहीं इतना नहीं पूछना है उनको, अगर हमने सबसे पूछने बैठ गए ना तो फिर हम लोग पागल हो जाएंगे, मतलब आप ये कर दो, दैट्स इट. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. आई एम नॉट सेइंग कि आप सबकी राय लो, लेकिन एक प्रॉब्लम एरिया समझना ज़रूरी भी होता है कभी कभी, especially for very important trainings. Okay. Somebody is writing, hi, LinkedIn user. I don't know your name because it's not popping up. Please add some value. The example you shared was a classic one of the trainer. That is you in the case. Yeah. Please add some value. I didn't understand that thing. Sorry. So it's a little contradictory. आप पूछ रहे हो, आप बता रहे हो. I'm sorry, I didn't understand that message. Right? So if you as a trainer, if you as a training company who is business building the business, if you as a client is hiring trainers, please focus on what you're looking for, but also focus on what you want out of the time that the trainer will spend there. And as a trainer, focus on what value and how you can provide basis the outcomes, because you are also spending a time. You're going to spend nearly a day building that whole training. Okay, it's not just about your time there in the training, it's a lot more before that. So please focus करिए कि अगर टाइम मैनेजमेंट लैकिंग है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ट्रस्ट बिल्डिंग, ट्रस्ट इज मिसिंग, टीम वर्क इज लैकिंग, email written communication is not working out, leadership transition hai, what is the focus? Or is it just for fun? Right? So that was the missing link that I wanted to share with you. Outcomes very very important. इसके बिना आप आगे मत बढ़ें. बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चंस पूछिए क्लाइंट से, जितना हो सके क्वेश्चन पूछिए, डिटेल में पूछिए. डोंट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस. Right? So that was the little thing that I wanted to share with you. If you have any question, LinkedIn user, please share what is it that you want to ask. I will be more than happy to answer that. Any questions? Uh, Anything that you want to add from your end? That why this is important? If you have any particular experiences of the missing outcomes in your training, so please do not start any training program without a particular outcome in mind. It's beneficial for everybody involved in that training, even for the participants, because उनकी जो लर्निंग होगी, वो जो इंफॉर्मेशन समझेंगे, वो वहीं से आएगी, उनकी जो नीड होगी. Very simple, right? Okay, thank you for this short live, what I wanted to share with you today. And
just in case if you have any questions which I may have not mentioned here, any clarity you may not have got here, write to me personally. If you're on LinkedIn, you can connect with me. You can directly message and whatever questions you might have, or you can just leave it below this video. And if you're watching on YouTube, all the links are going to be with the description of this video, and you can connect with me with your questions or queries. So thank you so much. LinkedIn पे हो तो मेरा YouTube पे जाके फॉलो करना, और अगर YouTube पे हो तो मेरे बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करना. Okay, thank you so much. I'm going to see you next week again, and with something interesting, right? So, ciao. Thank you so much. Keep looking for outcomes, focus on them. Do not start building your programs without an outcome in mind. Think of how that journey is going to be. Right. Take good care of yourself. Enjoy the weekend. Enjoy the lovely weather. I'm going to see you very, very soon. Take care. Bye bye. Have a great day. See you, people.